are in still in the planning phase of it. But stay tuned on our Twitter. The Twitter is FlutterConfin. So I'll just type as well FlutterConfin. So this is the Twitter handle. You can go there and we pretty much are very active on Twitter. So you can just go ahead and see there. Cool. So this is your next, I guess, 45 to 50 minutes look like. What is Flutter? Widgets and widgetry in Flutter, commonly used widgets in Flutter, and stateless and stateful widgets. We'll talk about everything. And in the last, we will be having one quiz wherein I'll test your knowledge, how much you were active, and what did you learn today. Cool. So let's get started. चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए. By the way, is everybody comfortable in Hindi as well? As in, is there anybody who is not comfortable in Hindi? Can you just tell me in the chat? Because I'll be using simultaneously Hindi and English both. It becomes easier when you talk in Hindi as well. Okay, I can speak pretty much Hindi, English, and a little bit of German. Okay, English is the best. Cool. So चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए. I have a lot of memes in my slide, so I hope you will be active throughout the whole session. And if you have any doubts, feel free to write it in the chat. I don't know if Bevi offers a Q&A or something. Okay, guten Tag. Cool. If Bevi has a Q&A thing, then probably you can go there and yeah, we have a Q&A thing. You can ask your questions there, maybe. Oh, I closed the chat. Give me a moment. Yeah. Okay. Good to go with any language. Cool. So, what is Flutter? You already told me pretty much about it, as in Flutter is a Google kit basically. So Flutter is not a Google kit. Flutter is Google's portable UI toolkit. Okay. So basically, it offers a variety of design elements and pretty much a lot of widgets which we can use to create beautiful UIs. And it is a cross-platform framework. It's not a language, okay? And every single word that I say, just keep that in mind because in the quiz, it will help you a lot. So, as I said, Flutter is used to build UI for platforms. Yes. So, Flutter is a framework, not a language. Then, okay, I thought someone raised their hand. It's fine. Okay. So, Flutter is Google's UI toolkit, which you can use to build beautiful multi platform applications, which means cross platform applications. You can build applications for web, Android, iOS, Linux, embedded device. Embedded devices, pretty much everything. So these are some of the apps that you can build with Flutter. Can anybody quickly Google and tell me how many issues exist in Flutter right now on GitHub? Fastest fingers first. Can anybody tell me? Go to GitHub. I saw Priyanshi had a session on Git and GitHub, so you should know how to use GitHub. 5K plus 11958. Who answered first? Aman Vivedi. Okay. How many of you know how to use Git and GitHub? Manik said a little bit. Priyanshi said, I hope they all must know.
I hope so too, because GitHub is the resume for every Flutter developer, or am I wrong? Is it for every Flutter developer or for all the developers? Can do contributions also. Yes, open source contributions you can do for all the developers. That's correct. Everybody uses Flutter nowadays, so everybody, not sorry, everybody uses GitHub nowadays. So everybody should know how to use Git and GitHub. Yes. Okay. So you are correct. There are 5K plus issues in Flutter, but then also we are using Flutter for production applications. Why? Even I have built so many Flutter production applications. But why are we using Flutter if there are so many, you know, issues in Flutter? Can anybody tell me? Obviously, because it is cross platform, and we as developers, yes, and we as developers have the, have the simple Flutter is best and most famous. It's not like Flutter is most famous, but yes, Flutter is growing. Everything has issues, that's correct. And we have the ability to make Flutter better, right? That's why. Does anybody know what do we mean by open source? Can anybody tell me what is open source? Open for all, code available to public, where we can contribute to different organizations. Open source where developers can contribute. Yes. So is Flutter open source? Is Flutter open source? Okay. So I can see many people are saying yes. Is there anybody who is in the opinion of no? Organizations publish their code on GitHub so that developers worldwide can contribute. Abhinendra, did you go to the GitHub of Flutter and were you able to see the issues in Flutter? Khushi, you too. Did you try to do that? If you were able to do that, if you were able to see the issues in Flutter, then that means Flutter is open source. Yes or no? It is, yes. This is the GitHub repository. My next question is, I don't know how many of you have worked with Firebase or not, but is Firebase open source? Mrityunjay said yes. Khushi said yes. Jatin said not now. Not he doesn't know, I guess. No, haven't worked with it. No, 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 no. So majority of people said no. That doesn't mean that Firebase is not open source. But unfortunately, Firebase is not open source. So Flutter is open source, but Firebase is not. Can anybody tell me when was Flutter introduced? What was the year? Aman said 2017. Did you all just Google it? I don't think so. Aman did. May 2017. That's correct. So Flutter is how many years old? Harsh said 2015.
So the Flutter team were in talk with the Dart team in 2015 whether to create a cross-platform framework or not. So they were in talk in 2015, but they actually launched the first version in May 2017. So Flutter was introduced in 2017. 6 plus. No, 2013 is not the right answer. Cool. So let's go ahead. Dart. What is Dart? You probably be thinking, why is this speaker asking so many questions? Right. But if I will not ask questions, then you all will be sleepy at the end. And I know this is a very basic question. It's there in front of you. Dart is the language for Flutter, programming language. Yes. So Dart is the programming language that we use with Flutter. So Flutter is a framework and Dart is the programming language. Is Dart only used with Flutter? Yes or no? Yes, obviously not. Dart can do a lot more than Flutter. Dart is optimized for user interfaces, creating user interfaces. You can create production level applications using Dart. And obviously, Dart is very fast on all the platforms. You can go to dart.dev and if you don't know about this language, Dart is an object oriented programming language, just like Java and C. There will be, you can obviously, okay, to create cross platform applications. You can obviously create cross platform applications using React Native. There is Flutter. Then in Android, Jetpack Compose is also has been introduced, right? So if you see on the left hand side, where you have this develop a native app for each device and maintain several projects, right? So this is how your path will look if you have a native, if you want to create a native app for each device and you have to maintain several projects. What we mean by that is, for example, I have to create a, for example, I'm working in a firm and my boss told me, hey, Akansha, you have to create a production level application for web, Android, and iOS. And you have to build it natively. So, what will I be doing, right? I'll ask him, please give me like 6 to 7 months. First, I'll create for web, then I'll create for Android, and then I'll create for iOS. Obviously, it's a random choice web, Android, and iOS. You can first create for Android, iOS, and web in any order based on the client's requirement. But then what I'll be doing first, I'll be working on maybe Moonstack or something for web. Then for Android, I'll be working on Android. And then for iOS, I'll be working on Swift. So I'll be having like three different projects to work on, right? And it will be so difficult for me to go through each project and do stuff. Basically, it will take a lot of time. Then what will happen is, for example, in the next 6 months I have created everything, right? Now my boss told me, hey Akansha, what we have to do now is we have to change the color of this button, or maybe we have to introduce this new feature, or enhance the feature that we already created. Then I'll say, please give me like 2 to 3 months because I have three projects to work on. So it will be very difficult for me to, change everything for, web, Android, and iOS. And maybe some things will work in Android and iOS, but not in web, right?
then what will happen? Obviously, it will take a lot of time and effort for me to do that. And in Android and iOS, that feature will work, but not in web. So it will be very difficult for me to maintain different projects, right? But for example, we are using Flutter to create that same application. So I'll have only one single code base from which I can do everything, right? I have to make sure that for web, Android, and iOS, my responsiveness and the way we have in iOS the icons and everything, that should be that should differ basically. So we will be having only one code base, and with that we can do everything, right? Everything. So we have to maintain only one project. Then it will be very easy for me to change the color of the button or introduce new features or enhance the existing features. So that is why I say with Flutter or any cross-platform framework, it will be very simple to do things, enhance things or introduce new things. But for a native app, it will be difficult for me to maintain different projects. So that is why I love Flutter. And there are other reasons as well that I'll tell you in a bit. Okay, so with support for iOS, Android, web, Windows, macOS, Linux, and embedded devices from a single code base, I can create cross platform applications with Flutter. Does anybody know when I talk about embedded devices, what does that mean? What do we mean by embedded devices? VM, connected devices, smart connected devices. Can we create a Flutter application for a watch? Yes. Okay. So basically, embedded device is any device on which you can run your software on a hardware. So, for example, someone wrote Android Auto connects both the car screen and the phone with the kind of same UI. Yes, you can say that. किसी के पास घर में कोई फ्रिज है जिसमें बेसिकली आप टच करके टेम्परेचर चेंज कर सकते हो एंड उसका डोर अलार्म ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, राइट? सो दैट इज वेयर एम्बेडेड डिवाइसेस कम्स इन। ओके, आपके फ्रिज में एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं बेसिकली ऑन। आप अब किसी भी हार्डवेयर पे अगर आप सॉफ्टवेयर रन कर पा रहे हो, सो दैट विल बी एन एम्बेडेड डिवाइस। ओके, so Flutter can create apps for all of these things: iOS, Android, web, Windows, Mac OS, Linux, embedded devices, and that too from a single code base. Cool, right? Okay, so Flutter is fast, beautiful, productive, and open. And when I say that, what does that mean is fast, we say, because it can very quickly compiles your source code to machine code. Okay, when we say productive, what do we mean by productive is it has a hot reload feature. So basically आपने फ्लटर छोड़ के एंड्रॉइड पे काम किया है कभी, एंड्रॉइड या आईओएस पे? मैं पहले जावा पे काम करती थी। ओके, तो जावा में काफी सारी लाइंस ऑफ कोड आपको लिखना पड़ता है, राइट? मैं आपको बताऊंगी हाउ डिड आई स्टार्टेड विद फ्लटर एंड में, व्हेन वी हैव अ Q&A and everything. But I was an Android developer like 2 to 3 years back, 3 years, I guess. Yeah. So उस time पे I have to, whenever I have to create any application, what I have to do is suppose मैंने color change किया,
तो मुझे पूरी की पूरी ऐप नेटिवली कंपाइल करनी पड़ती थी अपनी मशीन पे एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, राइट? आपने ये प्रॉब्लम फेस की है कभी? आपने जब अपनी ऐप को रन किया, उसको कंपाइल किया, तो वो काफ़ी टाइम लेता है, राइट? फ्लटर के साथ ऐसा नहीं होता। फ्लटर के पास हॉट रीलोड फीचर है। तो हॉट रीलोड फीचर क्या करता है? सपोज़ मैंने कुछ भी चेंज किया, येस, लॉट्स ऑफ रिसोर्स यूसेज, वो बहुत ज़्यादा होता था, राइट? तो मैंने अगर बटन का कलर चेंज किया, सो व्हाट विल हैपन इज़ इन इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड्स मेरे को स्क्रीन पे यूआई चेंज दिख जाता है। ओके, मैं आपको एक ऐप रन करके दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में एंड मैं आपको बताऊँगी हाउ डज़ हॉट रीलोड फीचर वर्क्स, ओके? तो बेसिकली प्रोडक्टिव हम इसीलिए बोलते हैं फ्लटर को क्योंकि वो इतनी जल्दी कंपाइल होता है कि एक्चुअली डेवलपर को मन करता है न्यू फीचर्स क्रिएट करने का एंड बेसिकली वो विजुअलाइज करने का तभी के तभी कि मैंने क्या चेंज किया है। अदरवाइज मेरी लाइफ की सबसे पहली ऐप आई गेस एक कैलेंडर ऐप थी और मुझे उसको बनाने में 4 घंटे लग गए थे। आई हैड अ विंडोज मशीन एंड दैट टू 4 GB विंडोज मशीन, उस पे एंड्रॉइड स्टूडियो जब मैं रन करती थी, मतलब आई कैन डू अ बारबेक्यू ग्रिल अपनी मशीन पे। इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वो हीट होता था। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अ विंडोज़ मशीन एंड दैट टू ऑन अ 4 GB। अब तो आई गेस 8 GB एंड 16 GB पे एंड्रॉइड स्टूडियो वर्क्स वेल, बट बहुत डिफिकल्ट होता था, राइट? तो आई यूज्ड टू फेस दिस प्रॉब्लम अ लॉट। तो मेरे को वो कैलेंडर ऐप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका यूआई क्रिएट करने में इट टूक मी 4 आवर्स। तो एक टाइम पे होता है ना कि आपको मन नहीं करता है काम करने का कि यार इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, हाउ विल आई वर्क इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस, राइट? क्योंकि वो बार-बार नेटिवली कंपाइल होता था, तो काफ़ी टाइम लगता था। बट फ्लटर हैज़ अ हॉट रीलोड फीचर व्हिच आई विल टेल यू इन अ लिटिल बिट कि हाउ डज़ दैट वर्क एंड एवरीथिंग। देन फ्लटर इज़ ओपन। What do you prefer for Flutter, Windows or Linux or Mac OS? I'll prefer Mac because Mac में आप iOS एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हो। विंडोज़ में आप Mac की एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली iOS की एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं एंड्रॉइड एसडीके यूज़ करती हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो से, बट मैं कोड वीएस कोड में करती हूँ। ओके? तो वो मेरे सिस्टम को और लाइट बना देता है। But I'll prefer Mac. But Windows पे भी you can create Android applications with Flutter. That is not an issue. Flutter is open. Flutter is open. That means Flutter is open source and beautiful because you can create beautiful applications with Flutter. अभी मैंने आपको when we were talking about Flutter and everything, मैं आपको ये वाला स्क्रीन दिखा रही थी, right? तो इसमें you can see there are so many applications built with Flutter and beautiful applications. Basically, you can create these UIs with Flutter. Okay. So Flutter is beautiful, no compromises for your design, for your designers basically. Fast, as I said, it can compile your source code to machine code very fast. Productive because it has the hot reload feature. आप अगर इसमें देख पा रहे हो, तो उन्होंने एक टेक्स्ट चेंज किया है, राइट? एंड जैसे ही उन्होंने हॉट रीलोड ये दबाया, ये जो बिजली जैसा साइन है, राइट? बेसिकली आप वो दबा अभी क्लिक्ड लिखा है, राइट? तो उन्होंने चेंज किया पुश्ड पे एंड उन्होंने वो हॉट रीलोड फीचर वाला वो दबाया एंड वो एकदम से फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में चेंज हो गया, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ हॉट रीलोड। दैट इज वाई वी से इट इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर डेवलपर्स एंड ओपन बिकॉज ऑब्वियसली फ्लटर इज ओपन सोर्स। अगर आपको भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करने में मजा आता है एंड आपको लगता है यू कैन डू इट, देन आप इश्यूज पे जाके फ्लटर के यू कैन सॉल्व देम, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम द फ्लटर कम्युनिटी and you can do open source contributions in Flutter as well. Okay, so today the LinkedIn data says that Flutter is the #1 fastest growing skill among software engineers. Millions of brands used Flutter for millions of users, and Flutter is one of the top 15 GitHub repositories in the entire world. Okay, I was
going through the chat if we have any questions or anything. Okay, Flutter apps in production. Now let's talk about this. Do you know any Flutter application or any Flutter application, any production level Flutter application? Google Pay. Cool. How many of you uses Google Pay? Google Maps is not created in Flutter. Mrityunjay has a hand raised. Okay. Google Assistant. Nope. ओके मैं अलग तरीके से पूछती हूँ क्वेश्चन किस किस का अकाउंट एसबीआई में है आई थिंक ये जो हैंड्स रेज हो रहे हैं ये एसबीआई अकाउंट वाले हैं राइट आपने कभी ऐप ट्राई किया है एसबीआई का आपको कैसा लगा एसबीआई का ऐप मैंने काम नहीं किया एसबीआई की ऐप पे यस इट इज बगी बट दैट इज बिकॉज उनके डेवलपर्स अच्छे नहीं है आई गेस बट द ऐप इज बिल्ट इन फ्लटर अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस किस के पास बीएमडब्ल्यू है I know it's a very silly question to ask. ओके मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ कि किस किस के पास टोयोटा की कार है एंड यू ऑल प्रोबेबली बी लाइक कि ये कैसा सवाल है जिसके पास गाड़ी नहीं है वो क्या करे बेचारा राइट सो बीएमडब्ल्यू का जो सिस्टम है इंफोटेनमेंट सिस्टम बेसिकली जिस पे आप गाने चलाते हो एंड मजे करते हो गाड़ी में बैठ के दैट इज क्रिएटेड इन फ्लटर ओके Toyota also uses Flutter. I'll show you a website. Okay, I'll drop the link of this website as well. इस website में you can see all the apps which has been built in Flutter. Because मैंने आपसे पहला question यही पूछा था कि अगर 5K plus issues हैं Flutter में No, XUV 700 doesn't use Flutter. Mahindra, I guess, in 3 or 4 years, because Tech Mahindra may, I saw there are openings for Flutter developers. तो इवन आई थिंक कि आफ्टर 3-4 years हमारे पास महिंद्रा की गाड़ी में भी आ जाएगा फ्लटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड दैट वुड बी वेरी कूल बिकॉज आई आल्सो हैव अ महिंद्रा कार आई वांट दैट फ्लटर एप्लीकेशन कूल सो बेसिकली मैंने आपको जो लिंक दिया है इट हैज yes it has all the brands that use flutter as you can see आपको पता है मैं आपको एक मस्त बात बताती हूँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन में बर्लिन जर्मनी में ठीक है तो फ्लटर कॉन के नाम से होती है वो ओके तो वहां पर दे एक्चुअली टॉक्ड टू द बीएमडब्ल्यू टीम एंड दे एक्चुअली गॉट अ बीएमडब्ल्यू वहां पर अपने कॉन्फ्रेंस में दे हैड द बीएमडब्ल्यू देयर एंड लोग देख सकते हैं बैठ के बीएमडब्ल्यू में कि हाउ इज द होल इंफोटेनमेंट सिस्टम वर्क राइट and I was like, this is so cool. They actually talked to the BMW team. They got a car, actually a BMW, and they had this, to showcase their Flutter application. So I hope someday we will be getting a BMW in FlutterConf India as well. But I don't know when. But I want that to happen so that Indian developers can, uh, set on a BMW and see how a Flutter application work. टेस्टिंग के लिए भी मिलेगी डेवलपर को आई होप एटलीस्ट ऑर्गेनाइजर्स गेट अ बीएमडब्ल्यू बट okay so BMW then we have Google Pay NU Bank KGGG I don't know what this app is but Alibaba
And does anybody know a story of Google Classroom? I mean, do you know that Google Classroom is now whole? It's built in Flutter, as you can see, Jan 22, 2023. I don't know कोई COVID वाले batch का है या नहीं, and I don't think so कोई है, right? But I was from a COVID batch, right? So I used Google Classroom a lot that time, and when I got to know, I guess they revamped the whole application recently only in Jan only. They Yeah, in January only they introduced the whole Google Classroom application. So अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कोड रिडक्शन हुआ फ्लटर में कोड लिखने से लाइंस ऑफ कोड कितने ज़्यादा रिड्यूस हुए परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा इनहांस हुआ when they revamped the whole application in Google Classroom. So basically, Google Classroom, Alibaba Group, Tencent, Betterment, Abbey Roads, Tencent, then BMW, eBay, NU Bank, Dream 11. कौन-कौन क्रिकेट देखता है? आई वॉच क्रिकेट, बट मैंने कभी सट्टा नहीं लगाया क्रिकेट में। आई मीन, आई हैवंट इंस्टॉल्ड द ड्रीम 11 ऐप येट। कोई ना कोई तो होगा जो ड्रीम 11 पे टीम बनाता होगा। माय डैड डज़ इट, बट आई डोंट। ओके, देन पबजी, ओह माय गॉड! पबजी कौन खेलता है? ट्राई किया था, पैसे डूब जाते हैं। बट एक होप होती है ना। Now BGMI, right? I know PUBG is banned in India, but कभी तो खेला होगा ना PUBG. I play COD, so uh, PUBG or BGMI I don't like that much, but BGMI is not in Flutter. PUBG is in Flutter, but BGMI is not. Oh, just session से पहले I have tried PUBG Mobile, PUBG Lite. Cool. So we have gamers as well, right? Whole app is built in Flutter. PUBG, yes, yes. iRobot. And there are a lot of applications. Okay, Toyota. I was talking about Toyota, right? कि किसके पास Toyota कार हो तो अब जिसके पास भी Toyota कार है, प्लीज वो घर जाके अपनी कार में बैठ के, आई मीन घर पे ही हो, घर पे अपनी कार में बैठ के जरा उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम चलाओ एंड देखो हाउ इज इट. ओके, Reflectly, Rive. There are a lot many applications. Okay, a lot many applications. But with Flutter, मैं load more करती जाऊंगी and ऐसे ही पूरा session निकल जाएगा. So let's come back. Okay, आप देखना जाके क्या क्या है and just go through it. Okay, cool. So are you like this? Khushi said she's in a hostel. Okay, when you go back to home, get your car and see. I was like this. I was like this only when I got to know about Flutter and everything. I'll tell you how I started with Flutter and what were the resources that uh, I got to. How is the Flutter community? How you can get into the Flutter community and everything. We'll talk about this at the end. Everything. Cool. Now let's talk about widgets and widgetry. So my next question is, does anybody know about what are widgets in Flutter? Even if you don't know, that's completely fine. Wizard Dash. Okay, so who is this cute little bird? Obviously, Manik told everyone, but owl. Oh my god, this is not an owl. अगर फ्लटर टीम को पता चला खुशी का आंसर तो I don't know what they'll do. Everything is made in widgets. So this bird is called Dash. Okay, I'll write Dash. And this cute little bird is Flutter's mascot. विज़ार्ड जो ऐप बनाता है. कूल. किसी को चाहिए ये फ्लटर बर्ड इन रियल?
तो तुम लोगों को फ्लटर कॉन्फ इंडिया में आना चाहिए था. Why didn't you all join FlutterConf India? We had a giveaway of Dash in FlutterConf India. I know, I know. Probably next time. Cool. So ये तो ठीक है. मैंने पूछा था what are widgets and Flutter? वो किसी ने नहीं बताया मुझे. Bunch of students from Lucknow. I can see Priyanshi, and I'm so happy to see there are so many people interested in building apps with Flutter because I really love Flutter. So, what are widgets in Flutter? Inbuilt components. I mean, pretty much you are very close to what are widgets in Flutter. Fundamental building block. Yes, you can say that widgets are the fundamental building blocks. Someone wrote everything in Flutter is a widget. That is right. Everything in Flutter is a widget. Part of user interface. That's correct. A hierarchy in Flutter. I mean, um, when we combine widgets, you can say it can create a hierarchy, but yeah. So, what are widgets? I'll tell you what are widgetry because you have to be clear of what are widgets. So everything in Flutter is a widget, and as you can clearly see, widgets are the UI component that you can use to show on a device screen, right? So visual components, that was correct. Fundamental building block, and someone wrote inbuilt components, right? So everything in Flutter is a widget, and widgets are the smallest UI component that you can use to show on a device screen. तो आप कोई भी अगर app देखते हो, like divs in HTML, yeah, probably, maybe, but they are a lot more than the divs in HTML. So मैं आपको दिखाती हूँ. So for example, you have to create this user interface, okay? You have to create this user interface using Flutter, right? Everyone is here. You can type in yes, yes, yes. Okay. Obviously, Flutter can create much more than this, but मैं आपको बहुत ही simple तरीके से समझाना चाहती हूँ. That is why I'm saying कि, for example, we have to create this in Flutter. Okay, this is a user interface we have to create in Flutter. So how will we create this? अब अगर आप किसी Flutter developer से मिलोगे तो वो यही बोलेगा that everything in Flutter is a widget. Okay, तो अगर हमें इस एप्लीकेशन को widgets में विजुअलाइज करना है तो हाउ विल वी डू दैट. ओके, एक बात याद रखना, व्हेन यू आर लर्निंग फ्लटर आपको विजेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको विजेट्स के बारे में नहीं पता होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप कोई भी यूजर इंटरफेस क्रिएट कर पाओ फ्लटर में. ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मैंने इस ये जो यूआई है इसको तोड़ दिया है. ठीक है, अब मैं इसके एक एक कंपोनेंट में बात करूंगी. ओके, और एंड में हम ये यूआई क्रिएट करेंगे. मैं कोड नहीं करूंगी, मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगी कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन देखते हो तो आपको उसको विजुअलाइज कैसे करना है विजेट्स में. ओके, सो सबसे पहला विजेट आता है स्कैफोल्ड. ओके, यहाँ पे कोई पेंटिंग करता है? यू कैन राइट यस, नो. ओके, सो लेकिन सबको पता है पेंटिंग क्या होता है, राइट? कूल. सो हम पेंटिंग किस पे करते हैं? पेन, सॉरी, पेपर या फिर कैनवस, राइट? कैनवस पता है सबको, राइट? कैनवस. सो बेसिकली अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो स्कैफोल्ड जो है ना वो आपका कैनवस है. ठीक है, अब आप इस पे कोई भी विजेट पेंट कर सकते हो. MS पेंट. कूल. सो कोई भी विजेट पेंट कर सकते हो. पेंट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जब कोई भी आर्ट क्रिएट करते हो, राइट, कोई भी पेंटिंग बनाते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या लेते हो? कैनवस, राइट? तो कैनवस के ऊपर आप पेंटिंग करते हो तो स्कैफोल्ड आपका कैनवस है. यू कैन से दैट. ओके, कलर्स पे ध्यान रखना. ठीक है, कि जैसे आप यहाँ पीछे देखो तो सबसे पीछे हमारा पर्पल कलर है, तो स्कैफोल्ड को मैं पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है,
सो दिस इज आर स्कैफोल्ड. सो आप इसको सोच सकते हो कि ये कोई कैनवस है पेंटिंग का. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये हमारा विजेट है, स्कैफोल्ड. एंड विजेट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट यूआई कंपोनेंट. ठीक है. एंड अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो विजेट्स आर लाइक योर क्लासेस. विजेट्स क्लासेस ही हैं. सबको क्लास तो पता ही होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? तो बेसिकली आपका हर एक विजेट एक एक क्लास है जिसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट? हमारे पास होता है ना फंक्शंस और वेरिएबल्स. तो उस तरीके से ही आप इमेजिन करो. ओके. तो फ्लटर टीम ने हमारे लिए पहले ये विजेट्स मतलब क्लासेस बना के रखी हुई हैं. हमें इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करना होता है. हमें इन सब चीजों को एक्सटेंड करना होता है. आप ऐसा समझ सकते हो. ओके. So this is your canvas. Canvas is your, scaffold. Scaffold is the name of the widget. Then अगर आप देखो, मैंने स्कैफोल्ड के ऊपर एक ऐप बार रखा है, राइट? तो स्कैफोल्ड से एक ब्रांच निकली एंड वो क्या क्रिएट कर रही है? ऐप बार. सो ऐप बार क्या होता है? आपने कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो उसमें एक नेविगेशन बार होता है, ठीक है? उसमें एक ऐप बार होता है, ठीक है, राइट? इतना तो बेसिक है, सबको पता होता है. फ्लटर इज लाइक बहुत बेसिक इंग्लिश ओनली. तो ऐप बार इज जो आपका टॉप मोस्ट एप्लीकेशन बार होता है, दैट इज ऐप बार. ऐप बार इज विजेट इन फ्लटर. अब मैंने बात करी थी विजेट्स एंड विजेट ट्री, राइट? nav बार काइंड ऑफ, राइट? तो विजेट ट्री क्या होता है? विजेट ट्री, जैसे जैसे आप विजेट्स को लेआउट करते हो ना अपनी स्क्रीन पर, वैसे वैसे वो विजेट ट्री क्रिएट होता जाता है. जैसे अभी मैंने आपको बोला सबसे ऊपर रूट लेवल पे स्कैफोल्ड है, विच इज योर कैनवस ऑफ अ पेंटिंग. देन उसके ऊपर आपने ऐप बार पेंट किया, राइट? तो वहां से एक ब्रांच निकली. अब मैं अगर स्कैफोल्ड पे ही एक कंटेनर रखती हूँ, राइट? दिस कंटेनर इज ऑफ ब्लू कलर. कंटेनर क्या होता है? जैसे आप कोई जार समझते हो. कंटेनर बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज या बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, राइट? तो दिस इज योर कंटेनर. तो वो भी स्कैफोल्ड के ऊपर ही लेआउट किया गया है, राइट? इसीलिए स्कैफोल्ड से ही एक रूट निकली है जिसको हम बोल रहे हैं कंटेनर. ओके. कंटेनर विजेट स्कैफोल्ड पे ही हमने रखा है, राइट? अब मैंने इस कंटेनर पे एक कॉलम रखा है, राइट? कॉलम क्या होता है? वर्टिकल एरे ऑफ विजेट्स. आप बहुत सारे विजेट्स वर्टिकल लिस्ट में जब शो कर सकते हो, वो है कॉलम. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो कंटेनर के ऊपर हमने एक कॉलम रखा है, राइट? और वो कॉलम में अगर आप देखो स्क्रीन पे तो दो विजेट्स आ सकते हैं, ठीक है? अगर आप देखो तो यहाँ पर एक विजेट आ सकता है और यहाँ पर एक विजेट आ सकता है. तो ये कॉलम जो है वो दो विजेट्स को रखने वाला कॉलम है अभी के लिए, ठीक है? लेकिन आप बहुत सारे रख सकते हो. देन हमने उस कॉलम पे एक रो रखी है ऊपर वाले में, ठीक है? एंड नीचे वाले में हमने टेक्स्ट विजेट रखा है. रो क्या होगा? अगर कॉलम वर्टिकल एरे ऑफ विजेट्स है तो रो होगा हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ विजेट्स. अभी यहाँ पर जो रो है वो दो विजेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन यू कैन पुट एज मेनी विजेट्स एज यू कैन. इतना क्लियर है सबको यहाँ तक? अभी हम बहुत बेसिक यूआई की बात कर रहे हैं. मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज करवाना चाहती हूँ कि आप कोई भी एप्लीकेशन जब देखते हो तो आप उसको तोड़ कैसे सकते हो विजेट्स में. क्योंकि अगर आपको विजेट्स समझ आ गया तो आप कोई भी यूआई क्रिएट कर सकते हो. ओके. सो ये टेक्स्ट विजेट हो गया. अब जो रो था उस रो पे हमने एक टेक्स्ट विजेट रखा, मतलब उसका जो पहला चाइल्ड है वो टेक्स्ट होगा एंड दूसरा चाइल्ड होगा एक आइकन. इतना क्लियर है? वाई? बिकॉज हमें जो यूआई क्रिएट करना था वो ऐसा दिखता था, इसलिए हमने रो पर एक टेक्स्ट विजेट और एक आइकन विजेट रखा. आप कुछ और भी रख सकते हो. इट्स योर चॉइस. आप आइकन की जगह एक और टेक्स्ट रख सकते हो या आइकन की जगह एक और कॉलम रख सकते हो और उस कॉलम में भी ऊपर और नीचे कुछ रख सकते हो, राइट? दैट इज योर चॉइस. आप यूआई कैसा बनाना चाहते हो. ओके. सो बन गया ना ये वही यूआई जो हमें बनाना था स्टार्टिंग में. तो सबसे पहले स्कैफोल्ड है. स्कैफोल्ड के ऊपर एक ऐप बार है. ऐप बार के नीचे स्कैफोल्ड के ऊपर एक कंटेनर है ब्लू वाला.
देन उस ब्लू कंटेनर के ऊपर एक कॉलम है जिसके अंदर दो चिल्ड्रन आ सकते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले में हमने रो रख दिया। अब रो जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ विजिट्स। जो मैं बोल रही हूँ एरे, इसका मतलब बहुत सारे विजिट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ओके, तो हमने एक टेक्स्ट रखा और एक आइकन रखा, और कॉलम का जो नीचे वाला था, राइट, उसमें हमने टेक्स्ट रख दिया। इतना क्लियर है? जो हमें बनाना था यूआई, वो हमने विद द हेल्प ऑफ विजिट्स बना दिया है। ओके, सो आई राइट अ लॉट ऑफ मीडियम आर्टिकल्स। तो मैंने, जिसको ये समझ आ गया अभी, और किसी को अगर समझना हो दोबारा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू दिस मीडियम आर्टिकल। एंड मैंने इस मीडियम आर्टिकल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, यही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, so this is the medium article, and as I said, everything in Flutter is a widget. Then ये UI को हमने कैसे widgets में तोड़ा है, एंड कौन सा widget क्या करता है, वो सब मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। So you can go here and see everything जो भी मैंने आपको अभी explain किया है। Okay, column, row, text, everything. And I think I have a GitHub repository. Okay, इस GitHub repository में I have a widget to example करके, okay, इसके अंदर you can go and you can see, you can clone this and you can run this। तो आपको ये वाला यूजर इंटरफेस जो हमने अभी क्रिएट किया है, बेसिकली ये यूजर इंटरफेस जो अभी हमने क्रिएट किया है, वो बिली बेसिकली विजिट्स के थ्रू जो मैंने आपको विजुअलाइज करवाया, ये आप कोड कर सकते हो। ओके, तो आप इसको रिपॉजिटरी को क्लोन करके बस रन करना अपने उसमें सिस्टम पे, एंड्रॉइड पे रन कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि हाउ द कोड इज रिटन फॉर दिस। ओके, सो लेट्स कम बैक। सो अब आप, आर यू लाइक दिस आफ्टर सीइंग हाउ यू कैन create any app with widgets? That mean basically scaffold is the body of the whole application. Yes, basically you can say scaffold is the body of the whole application. Okay, so this is a travel app UI. Okay, ये एक travel app का user interface है, एंड ये कोई एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन है, आप ये सोचो। ओके, एंड अगर आप इसमें देखो, तो यहाँ पर मैंने इसको दिखा रखा है, तो कि हाउ यू कैन यू नो specify everything in terms of widgets। अगर आप देखो तो यहाँ पे we have an app bar, we have an image। Image is also a widget in Flutter। Okay, we have two types of images in Flutter। One is a network image and one is an asset image। Okay, then we have a container। उस container के अंदर we have a text। Always remember, container के पास सिर्फ एक ही child हो सकता है। Okay, yes, this is that easy। सो कंटेनर के पास एक ही चाइल्ड हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस, दैट कंटेनर हैज ओनली वन चाइल्ड। एक बार जरा इसको देखो, ट्रैवल ऐप लेआउट को, एंड इसको देखो, और इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे को बताओ। आई जस्ट गिव यू लाइक 2 minutes। Please elaborate the thing that containers can only have one child। Okay, so basically Flutter team ने, child means that can only one thing, and yeah,
सो चाइल्ड का मतलब है कि एक विजिट। चाइल्ड मैं देख ही रही थी कि मुझे मेरा ये विजिट एग्जांपल वाला ऐप अगर मैंने क्लोन करके रखा हो सिस्टम में, so I can run it and then tell you. Just give me one moment. I'll try to run it. I'll clone this क्योंकि मेरे सिस्टम में नहीं है ये अभी. Just give me like one moment. So basically मैं अगर आपको बताऊं तो कंटेनर के पास प्रॉपर्टी है चाइल्ड, और उस चाइल्ड के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन का मतलब है कि आप बहुत सारे विजिट्स लेआउट कर सकते हो, राइट, कॉलम के अंदर. बट जब मैं बात करती हूँ कंटेनर की, तो कंटेनर बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही चाइल्ड लूंगी. ओके, एक ही चाइल्ड का मतलब है, अब वो चाइल्ड कॉलम हो सकता है अगर आपको मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट करना हो उसमें. ये मैं आपको बेटर समझा सकती हूँ दिखाकर. लाइक गिव मी वन मोमेंट. मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा दूसरे वाले अकाउंट में, एंड देन मेरे को क्लोन करना पड़ेगा. तो लाइक जस्ट गिव मी वन मोमेंट. इतना आप ये देखो एंड समझने का ट्राई करो. Okay, so is it a कलेक्शन? मैम व्हाट इज लिस्ट? ओके, सो लिस्ट क्या होता है आपको पता है, आप स्क्रॉल कर सकते हो चीजों को, राइट? तो लिस्ट जो है, इट इज अ विजेट इन फ्लटर. यू कैन से लिस्ट में बिल्डर वी हैव विजेट इन फ्लटर. उससे आप स्क्रॉलेबल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होंगे एंड आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो. दैट इज व्हाट इज लिस्ट. Then what was the next question? Will row or column widgets array inside a container consider as one child? Yes. अगर आप कंटेनर को मल्टी विजेट वाला बनाना चाहते हो, बिकॉज उसके पास एक ही चाइल्ड है, तो आप चाइल्ड के अंदर कॉलम डाल दो एंड दैट विल बी प्रिटी मच दैट यू नीड. ओके, तो वो मल्टी चाइल्ड हो जाएगा. मैं ओपन कर रही हूँ, मेरे को एक मिनट दो. गिटहब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको गिटहब नहीं आता होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क. अगर आप इवन रिमोटली काम करते हो किसी कंपनी के साथ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. Why is it not opening VS Code? Open folder. Cool. Now like if we want to add an image and a text together in a container, yes, if you want to have an image and a text together, then you need a stack widget, because अगर आपको image के ऊपर text चाहिए तो आपको stack चाहिए होगा. Stack is also a widget in Flutter. Widget tree. Uh,
Can learn from YouTube. Apna college. Apna college, does it give you a Flutter course as well? I didn't know about it. Flutter. I have so many projects that I got confused which project was that. Acha, okay, Git and GitHub. Cool. So I have to share my entire screen for this. Share screen, entire screen. So I think my entire screen is visible to you now, right? I can't see the other screen. That is why, please tell me, maybe Priyanshi or someone from the team, yes or no. Yes, ma'am, it's visible. Okay. So now I'll run the app in Android. Okay. So I have this lib. I'll just keep this here. Probably I'll just do this, then I can see everything. Cool. Maybe you can come with a free series of Flutter on YouTube. It will be very helpful and I'll watch it. I write Medium articles from basics of Flutter to advanced of Flutter. I try to cover every topic. So you can learn from there because I'm not good at creating videos, probably. Cool. So now, is the screen, as in, I know the screen is visible, is the code visible too? Is it enough big to see? Okay. So I have this main.dart. What I'll do is I'll probably first run this. Till the time it is running, I'll tell you. Okay. So in main.dart, obviously everybody knows that it is the entry point for every application. So in Flutter also we have a main.dart. Then we have this stateless widget, which I haven't told you about. I'll tell you at the end. So just bear with me. We have two kinds of widget, stateless widgets and stateful widgets. So abhi ke liye, just remember we are using a stateless widget here. Okay. Then we have a material app. So मैंने आपको बोला था scaffold is the root, but basically material app is the root. But material app आपको visible नहीं होता है. That is why I said scaffold. Okay. So material app जो होता है, that is also a class. Okay. अगर मैं आपको दिखाऊं तो मटेरियल ऐप इज लाइक यू कैन सी इट इज अ क्लास जो कि स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड करता है, जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया व्हाट इज स्टेटलेस एंड स्टेटफुल. अभी आप बस ये देख लो कि यहाँ पे स्टेटफुल विजेट यूज हुआ है. दोबारा से जाते हैं. ओके. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट. ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास है. ओके. सो इस में अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. तो मटेरियल ऐप जो होता है ना, मटेरियल ऐप गिव्स यू द डिजाइन लाइब्रेरी. गूगल की एक डिजाइन लाइब्रेरी है, मटेरियल डिजाइन. वो आपको प्रोवाइड करता है आपकी फ्लटर एप्लीकेशन को आप यूज करो कर पाओ इसीलिए. देन हमारे पास एक होम प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. होम प्रॉपर्टी इज द स्कैफोल्ड. अब ये जो टाइटल है, ये कहाँ पे यूज होता है? ये जो टाइटल है ना, अगर मैं इसको वेब पे रन करूँ इस सेम एप्लीकेशन को, तो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर जैसे क्रोम पे न्यू टैब लिखा हुआ है ऊपर, राइट. एक आइकन है और साइड में एक टेक्स्ट है, न्यू टैब, राइट. तो ये अगर मैं वेब पे रन करूंगी तो मुझे मटेरियल ऐप लिखा हुआ दिखाई देगा. ओके. तो ये वो टाइटल है. देन होम इज द होम एक प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप में, और उसके अंदर हमने स्कैफोल्ड यूज किया है. एंड स्कैफोल्ड आई टोल्ड यू इट इज द कैनवस. देन उसके अंदर एक ऐप बार है. ओके. मैंने आपको बताया था जब हम वो क्रिएट कर रहे थे. ऐप बार के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, राइट. तो वो ये है, widget tree example. Okay. एंड देन वी हैव अ कंटेनर, एंड आई एज आई टोल्ड यू कंटेनर के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है, राइट. तो अगर आपको याद हो, मैंने ये यूआई दिखाया था आपको, राइट. ये यूआई. तो इस यूआई में एक कंटेनर था, ठीक है. और कंटेनर का मैंने बोला था एक ही चाइल्ड हो सकता है. तो उस चाइल्ड को हमने, मतलब वो कौन सा चाइल्ड था, एक कॉलम था, राइट. तो अगर हम वापस इस पर आते हैं
तो आप देखो कि एक कॉलम है जो कि कंटेनर का एक ही चाइल्ड हो सकता है, तो मुझे उसे मल्टी मल्टी चाइल्ड करना था, इसलिए मैंने कॉलम दिया और कॉलम के पास चिल्ड्रन होता है। और मैंने आपको बताया था कि कॉलम मेरे पास दो विजिट्स का है, अभी एक रो है और एक टेक्स्ट है, राइट? यही था यहाँ पर भी। कॉलम है, कॉलम में दो चिल्ड्रन हैं हमारे पास, एक है हमारे पास रो ग्रीन वाला एंड एक हमने दिया टेक्स्ट, ठीक है? तो यही हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक रो और एक ये टेक्स्ट, ठीक है? देन खत्म हो गया एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं रो की। रो की रो की जब हम बात कर रहे हैं तो रो में भी एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है, राइट? एंड चिल्ड्रन में हमने क्या दिया, टेक्स्ट और आइकन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास एक रो था, रो में हमारे पास एक टेक्स्ट था और एक आइकन था, स्टार आइकन। तो इस तरीके से हमने इस ऐप का कोड लिखा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू राइट इट एंड ये गिटहब पे अवेलेबल है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो। जब तक ये एप्लीकेशन रन हो रही है आई विल एक्सप्लेन बाकी चीजें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया राइट कि एक ऐप बार है एंड एज आई टोल्ड यू ऐप बार के पास एक टाइटल प्रॉपर्टी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऐप बार के पास एक टाइटल प्रॉपर्टी है, ठीक है? और वो टाइटल प्रॉपर्टी में हमने लिखा है विजिटरी एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगर हम ये यूआई बना रहे होते तो हम टाइटल प्रॉपर्टी में एक टेक्स्ट विजिट डालते और टेक्स्ट विजिट में हम देते ट्रैवल ऐप यूआई। तो ये रन हो गया है, ओके? मेरे पास एक ऐप बार है, मैं इस ऐप बार में एक कलर कलर डू वी हैव अ बैकग्राउंड कलर, राइट? बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, कलर्स डॉट ब्लू, ओके? एंड मैंने हॉट रीलोड किया, ओके? आपको तो आप देख रहे हो फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स एंड आई गॉट दिस, ऐप बार का कलर चेंज हो गया, राइट? तो अगर आप देखो तो मैंने ऐप बार को एक बैकग्राउंड कलर दिया। सो दिस इज द बैकग्राउंड कलर। देन आई हैव अ टाइटल प्रॉपर्टी एंड टाइटल में मैंने एक टेक्स्ट विजिट के अंदर लिखा है विजिट ट्री एग्जाम्पल। देन आई हैव दिस कंटेनर, मतलब पहले स्कैफोल्ड था, राइट? तो ये पीछे वाला पूरा स्कैफोल्ड है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो स्कैफोल्ड का भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता है, कलर्स colors dot purple. Do we have a purple? Then I have this, okay? तो आप देख रहे हो ये scaffold है, ठीक है? Scaffold, then we have an app bar and ये body का कलर ही दिखा बिकॉज ऊपर का कलर मैंने चेंज कर दिया है एंड ऐप बार का डिफॉल्ट कलर वाइट है, तभी हमें पहले कलर नहीं दिखा था। देन कंटेनर के अंदर आई हैव अ कॉलम एंड कॉलम में आई हैव टू चिल्ड्रन, पहला है रो, ठीक है? दिस इज द रो। if I can wrap this row wrap with container कंट्रोल के, यहाँ पर हमारा कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा एंड देन इसको हम कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट येलो। तो आपको रो दिख जाएगा, ठीक है? दिस इज द रो। तो पहला चाइल्ड क्या है, रो, ओके? दिस इज द रो। रो के पास कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है कलर की, दैट इज वाई मैंने उसको एक रैप किया है कंटेनर में एंड देन उसको मैंने कलर दिया ताकि कंटेनर का मैं कलर आपको चेंज करके दिखा सकूं कि अब कंटेनर के अंदर एक रो है, ओके? तो दिस कंटेनर हैज अ रो एंड देन दिस रो हैज टू चिल्ड्रन विच इज टेक्स्ट एंड आइकन, ओके? एंड देन दूसरा चाइल्ड क्या है हमारे पास, अगर आप देखो तो ये कंटेनर है, ठीक है? एंड कॉलम में दूसरा चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट, ओके? विच इज दिस टेक्स्ट टू। आप इसको कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं प्रोबेबली, तो आप बेटर देख पाओगे, ओके? सो आई होप दिस इज क्लियर, आई वाजंट रीडिंग द चैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? as you can see text widget has a property called style and style के पास text style class है, ओके? अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज हम टेक्स्ट को देखें, ठीक है? टेक्स्ट विजिट था, राइट? एंड मैंने आपको बोला था कि ऑल द विजिट्स आर क्लासेस। सो दिस इज हाउ द फ्लटर टीम हैज क्रिएटेड, ये पूरा फ्लटर टीम ने क्रिएट किया है सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज इट।
राइट. सो दिस इज द पावर ऑफ फ्लटर. इवन आप खुद के कस्टम विजेट्स भी क्रिएट कर सकते हो इन विजेट्स को यूज करके. ओके. सो दिस शुड बी क्लियर एंड आई होप समझ आ गया होगा. व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स? ओके, विल डिस्कस. प्रीरिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है, बस आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. Then commonly used widgets in Flutter, I've already talked about it. Column, which is a vertical array of widgets. ठीक है, तो column आप कैसे define करते हो? ऐसे. Then we have row, which is a horizontal array of widgets. मैंने आपको ये भी दिखा दिया है. Container, मैंने आपको बोला था container has only one child. Uh, so you can define height, width, color, everything for a container. Then we have a text widget. तो text widget will only display a string of text. ठीक है. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पॉपुलर डेस्टिनेशन या हेलो, और मैंने आपको दिखाया था विजिटरी एग्जांपल एंड एवरीथिंग. कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो आप टेक्स्ट विजिट यूज कर सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव इज एन इमेज. मैंने आपको बताया था इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ नेटवर्क इमेज एंड वन इज एन एसेट इमेज. तो एसेट इमेज क्या होती है? एसेट इमेज जो आप खुद अपने कोड में इमेजेस डाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास ये फोल्डर्स हैं, राइट. यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एसेट्स. ठीक है. एंड एसेट्स क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, इमेजेस. ठीक है. एंड इसके अंदर मैंने कोई भी इमेज डाल दी. ओके. कोई भी इमेज. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, pubspec.yaml में जाऊंगी. pubspec.yaml इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसके अंदर आप सारी डिपेंडेंसी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन की डिफाइन करते हो. ठीक है. ये हमारी डिपेंडेंसीज है. ये डिपेंडेंसी है. ये डिपेंडेंसीज है. ओके. इसमें हमारे पास ये वाला है एसिड्स के लिए. ओके. तो ये तो फॉन्ट्स के लिए, इमेजेस के लिए ये रहा. तो आप इसको क्या करोगे, इसको अनकमेंट करोगे. ठीक है. एंड देन अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं तो आप ऐसे करोगे. ठीक है. आप मतलब ये बताता है अगर आपको कोई एक इमेज डिफाइन करनी है. अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज हमारे पास कोई इमेज होगी, अ डॉट बर इमेज करके कुछ इस नाम की इमेज होगी इस इमेजेस फोल्डर में, राइट. तो उस तरीके से आप डिफाइन करते हो एक एक इमेज. बट अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सब इमेजेस को इंपोर्ट करने के लिए अपने फ्लटर एप्लीकेशन में आप ऐसे लिख दोगे. एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. द एसेट्स डायरेक्टरी इमेजेस डजंट एग्जिस्ट. तो यहाँ पर एक्चुअली पाथ पूरा नहीं लिखा है. एसेट्स एंड देन इमेजेस एंड देन अब ये पाथ बिल्कुल सही है. तभी मुझे वो लिंट दिखा रहा था. लिंट क्या होता है? बेसिकली आपकी फ्लटर एप्लीकेशन आपको वार्निंग देती है कि ये प्रॉब्लम है आपकी फ्लटर एप्लीकेशन में, आप इसको ठीक कर लो. अदरवाइज जो भी आप करने जाओगे वो नहीं होगा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक एसेट्स फोल्डर बना के इमेजेस फोल्डर बनाया था, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ा. अगर मैं डायरेक्ट इमेजेस फोल्डर बनाती तो ये वाली चीज काम कर जाती, ये वाली. ठीक है. लेकिन अभी ये काम नहीं करेगी. उसने मुझे एरर दिया था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. अब ये सही है. ठीक है. तो अगर आप कोई भी इमेज यूज करना चाहते हो अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में, तो आपको कुछ नहीं करना. इमेज डॉट एसेट और उस इमेज का पाथ देना है. यहाँ पर नेटवर्क है, आपको मैं एसेट का बता रही हूँ. नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इमेज, कोई भी इमेज आप गूगल से उठा रहे हो, उसका यूआरएल है आपके पास. तो आप क्या करोगे, इमेज डॉट नेटवर्क और डबल कोट्स में उसका स्ट्रिंग दे दोगे बेसिकली. तो दिस इज हाउ यू इम्पोर्ट images in Flutter. Is this clear? Okay. So these are the images in Flutter. Then अगर आपको एक हमारे पास स्टैक भी होता है. स्टैक सबको पता है कि अगर आपको ओवरलैप करना है विजेट्स को, राइट. अगर जैसे हमारे पास प्लेट्स होती हैं स्टैक्स में. ठीक है. स्टैक में प्लेट्स होती हैं या पेपर्स होते हैं या ऐसे. अगर आपको विजेट्स को स्टैक करना है तो आप स्टैक विजेट यूज कर सकते हो, विच इज ऑल्सो मल्टी चाइल्ड विजेट. ओके. तो यहाँ पे 3 कंटेनर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो सबसे पहले हमने रेड कंटेनर दिया इसीलिए वो सबसे नीचे है. देन नेक्स्ट हमने ग्रीन कलर का कंटेनर दिया इसीलिए वो उसके ऊपर है, रेड वाले के ऊपर. एंड देन लास्ट में ब्लू, तो ब्लू सबसे ऊपर है. तो दिस इज हाउ. देन आपको पता है पुश एंड पॉप एंड एवरीथिंग. तो लिस्ट व्यू, किसी ने मुझसे पूछा था कि लिस्ट क्या होता है. तो बेसिकली लिस्ट व्यू
जब आप एलिमेंट्स को किसी लिस्ट में डिफाइन करते हो और आपको स्क्रॉलेबल बनाना होता है तो आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करते हो और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है आइटम काउंट, वो देते हो ये बताने के लिए कि कितने सारे आपके, अगर आप उसको 10 देते हो तो हमारी फ्लटर आपको ये पता होगा कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स आएंगे जिनको मुझे स्क्रॉलेबल बनाना है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। ग्रिड व्यू 2D एरे बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये 2x2 का ग्रिड है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। तो आप फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके ये सारे विजेट्स के बारे में पढ़ भी सकते हो। एंड मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इन विजेट्स के बारे में आपको बेहतर समझाने के लिए। तो गेटिंग टू नो द विजेट एस्केप पार्ट 1 एंड गेटिंग टू नो द विजेट एस्केप पार्ट 2। तो ये मेरा मीडियम है, मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ चैट में। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ये सब आर्टिकल्स लिखे हैं एंड इसमें ये वाले जो 2 आर्टिकल्स हैं, गेटिंग टू नो द विजेट्स के पार्ट 1, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने सब विजेट्स के बारे में बताया। मटेरियल ऐप क्या है, स्कैफोल्ड क्या है, देन सिंगल चाइल्ड लेआउट विजेट्स कौन से होते हैं, मल्टी चाइल्ड, स्लिवर, ठीक है, कंटेनर, रो, कॉलम, फिर उनमें डिफरेंस, बाय डिफॉल्ट कॉलम का मेन एक्सेस क्रॉस एक्सेस क्या होता है या रो का मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस क्या होता है, ये सब आप इसमें से सीख सकते हो। ओके, फ्लेक्स विजेट, देन सेकंड पार्ट में मैंने और भी विजेट्स के बारे में बताया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको स्टैक विजेट मिलेगा, देन कार्ड विजेट क्या होता है, देन लिस्ट व्यू बिल्डर क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हो, ग्रिड व्यू क्या होता है। तो जो भी मैंने अभी आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने आर्टिकल लिखा है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। मैं मीडियम आर्टिकल तो मैंने आपको दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये पार्ट 2 वाला आर्टिकल दे देती हूँ अभी, तो आप पार्ट 1 पे भी जाके देख सकते हो। ओके, so is this the end? Are you all bored, or is it like बहुत ज्यादा लंबा हो गया है सेशन, मजा नहीं आ रहा है and stuff like that? कोई हो रहा है तो you can just tell me, we can make it interesting in any way. तुम लोग बोलोगे तो I can dance or something. I'm just kidding. uh, Okay, so this is sorry, but not the end. I told you that the most important topic of Flutter, which is stateless and stateful widgets, this everyone should know. Okay, so I know you are like this. अभी रुको, मैं ना दोबारा से entire screen की जगह सिर्फ एक screen share करती हूँ because मेरे को problem हो रहा है chat देखने में. Okay, okay. So I know you are like this only कि अभी ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है, but just the last topic, stateless and stateful widgets. Okay, Priyanshi, is it okay if we go above time? As in, I know the session was for like 1:15 or something. No problem. Like we can take it to like 10 or 15 minutes more, I guess. Like it depends on the Okay. students. I mean, I think not everybody is like bored or something. Yeah, like they are So, enjoying. Actually, they क्योंकि are अभी enjoying. we have a then that's fine. Yeah. Okay, so let's talk about stateless and stateful widgets. मैं आपको बहुत easy तरीके से बताती हूँ stateless and stateful widgets क्या होता है, ठीक है? So stateless widgets are like जिसके पास कोई state नहीं होता। अब जब मैं बोल रही हूँ stateless widgets are those widgets which does not have any state associated with them. What do we mean by that is जब आप किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करते हो, राइट, तो कुछ कुछ चीजें स्टैटिक होती है, जैसे कि टेक्स्ट, राइट, आप उस पर क्लिक करते हो कुछ नहीं होता। आइकन है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो जो चीजें स्टैटिक हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टेटलेस विजेट्स। ओके, so stateless widgets are those widgets which does not have any state associated with them. They are immutable, they can't change. Okay, they remain unchanged throughout their lifetime. This is clear. As I have written clearly in simple words, stateless widgets cannot change their state during the runtime of the application.
which means the widgets cannot be redrawn while the app is in action. Obviously, जब कोई user interact कर रहा है app के साथ, कोई text है या icon है, उसके बटन, उसके click पे कुछ नहीं हो रहा है, right? That is immutable, वो change नहीं हो रहा है. That is what we call as stateless widget. तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मटेरियल ऐप एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को, राइट, सॉरी स्टेटफुल विजेट को. लेकिन जो हमारी ऐप थी, जो मैंने क्रिएट की थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, राइट, उसमें वो क्या कर रहा था, जो हमने लिखा था कोड उसमें, क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट्स. स्टेटलेस विजेट क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जो एप्लीकेशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूआई था, वो सिर्फ हम देख पा रहे थे, क्या उसके क्लिक पे मैं कुछ कर रही थी? Yes or no? As in, was I doing anything on the click of the text or icon or anything like that? No, right? So that is why we were extending stateless widget. वहीं पर अगर मैं मेरी ऐप में कोई बटन डालती, right? तो बटन के पास एक ऑन प्रेस्ड कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है? वो फंक्शन क्या करता है? ऑन प्रेस्ड फंक्शन होता है बेसिकली, उसमें हम लिख सकते हैं कि इस बटन के क्लिक पर मुझे दूसरे पेज पे जाना है, या इस बटन के क्लिक पर मुझे ये कलर चेंज करना है, राइट? तो वहां पर मैं क्या करती, क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेट फुल विजेट. क्यों? स्टेट फुल से ही समझ आ रहा है कि वो आपके पास एक स्टेट है. Stateful widgets are those widgets which do have a state associated with them, and they can change their property during runtime of the application. They are dynamic. They are mutable basically. तो कोई चेक बॉक्स हो गया. अब अगर हम चेक बॉक्स की बात करें, तो चेक बॉक्स के पास दो स्टेट होगी, या तो ट्रू या फॉल्स. अगर वो चेक बॉक्स है, अगर हमने उस पर क्लिक किया, इसका मतलब वो टिक हो गया, तो वो क्या हुआ, ट्रू. अगर हमने उस पर दोबारा क्लिक किया, तो उसकी स्टेट क्या चेंज हो जाएगी, फॉल्स. तो बेसिकली पीछे एक वेरिएबल होगा जो कि ये ध्यान रख रहा होगा उस चेक बॉक्स पे कि अब उसकी स्टेट ट्रू है या फॉल्स है. रेडियो बटन हो गया, स्लाइडर हो गया, कोई फॉर्म है, या टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो, तो उसमें आप चीजें फिल करते हो, राइट? तो वो टेक्स्ट फील्ड है. जब आप लिख पा रहे हो अपना नाम, ईमेल आईडी, जैसे गूगल फॉर्म है, तो वो एक फॉर्म है, राइट? उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं. So this is what we call as stateful widgets. इतना clear है what are stateless widgets and what are stateful widgets? So basically stateless and stateful widgets जो होते हैं, जो भी मैंने आपको widgets बताए थे, text widget, interactive widgets are stateful widgets, whereas non-interactive are stateless. Yes, you can say that. इंटरैक्टिव वाले स्टेटफुल होते हैं और नॉन इंटरैक्टिव वाले स्टेटलेस होते हैं. तो बेसिकली जब मैंने आपको कंटेनर, कॉलम, इमेज, टेक्स्ट ये सब बताए थे, these all widgets lie in two broad categories, which is stateless and stateful widgets. तो आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे रूट लेवल पे ये दो widgets की कैटेगरीज हैं, एंड उससे बहुत सारे widgets आ रहे हैं. अगर हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट विल लाई इन स्टेटलेस widget कैटेगरी. अगर हम चेक बॉक्स विजिट की बात कर रहे हैं, तो दैट विल लाई इन स्टेटफुल विजिट कैटेगरी. ओके, सो ये टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एंड इसके अंदर वो सब विजिट्स आते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे और बताए थे. ओके, सो नाउ सबके पास एक क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज टू लर्न फ्लटर लाइक अ प्रो? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन learning Flutter now? Can you please tell me in the chat? Okay, there are a lot many people who want to learn Flutter. Okay, so अगर आपको जानना है कि how to learn Flutter, you can scan this, or I'll give you the link of this article. I have written an article how you can kickstart your journey in Flutter. I'll drop the link in the chat. So this will have all the resources, and I'll tell you in short ki how did I started with Flutter. So basically, I was a Java developer. Basically, I was an Android developer. तो मैं Java पे काम करती थी बहुत ज़्यादा. तो when I was in my college first year, I was like बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे domains हैं. Where should I start, right? Uh, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी. मैंने पहले मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ट्राई किया, तो मुझे मज़ा आ रहा था, बट आई थॉट मे बी बाकी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, सो दैट मुझे ये पता चले कि मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट किसमें है. क्योंकि मेरे सीनियर्स हमेशा मुझे बोलते थे कि हर चीज़ ट्राई करो, देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू गो अहेड विद. तो मैंने उसके बाद वेब डेवलपमेंट ट्राई किया.
देन वेब डेवलपमेंट के बाद मैंने AIML भी ट्राई किया था. So basically, I tried a lot many things. Then I came back to this only क्योंकि हमें एक internship project करना था और मुझे basically app development ही सबसे ज़्यादा अच्छे से आता था. तो मेरे teachers ने बोला you have to do an internship project, so decide one domain and do it. तो तभी मैंने एक वो कैलेंडर ऐप जो मैंने आपको बताया था वो क्रिएट करने का ट्राई किया था. बट दैट वाज द फर्स्ट ऐप दैट आई क्रिएटेड इन माय लाइफ. तो वहाँ पर आई थॉट कि यार मैं घूम घूम के ना वापस ऐप डेवलपमेंट पे ही आ जाती हूँ, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो मैंने एक और ऐप बनाई थी जो कि जिसमें मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था. द ऐप वाज ऑटो सोटिजन. वो जावा में क्रिएट की हुई है ऐप. वो ऐप क्या करती थी, जैसे हम कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो अगर किसी को मेल मर्ज पता हो तो एक टेम्पलेट होता है और वो एक्सेल शीट से मैच करता है कॉलम एंड फटाफट फटाफट नाम लिख देते हैं सर्टिफिकेट में. ठीक है. तो क्या होता है कॉलेज में सबको ना हाथ से नाम लिखवाते थे हमारे सर्टिफिकेट. जैसे कोई 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 कंपटीशन हुआ तो एक टीचर ना क्लास में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोल देता है कि आप ये सर्टिफिकेट्स ले लो और ये एक्सेल शीट है इसमें से देख देख के नाम लिख दो बच्चों के एंड कौन सी पोजीशन आई है वो लिख के उनको दे दो. तो कॉलेज में सोसाइटीज भी होती है या टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, तो यही होता था. तो हमें एक आइडिया आया कि हम एक ऐप बनाते हैं जिसमें ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो एक एक्सेल शीट लेगा. उस एक्सेल शीट में जो कॉलम्स होंगे वो उस टेम्पलेट से मैच करेगा एंड देन उसको ना फिल कर देगा और एक ज़िप फ़ोल्डर बना देगा जिसमें सारे सर्टिफ़िकेट्स होंगे. तो दिस वाज़ द आइडिया. तो हमने ये ऐप क्रिएट किया एंड फिर मेरे को मतलब मेरा कॉलेज एप्लाइड साइंसेज़ का कॉलेज था एंड उसमें रिसर्च वगैरह लिखते थे काफ़ी आर्टिकल्स एंड ऑल. तो हमारी टीचर ने बोला कि रिसर्च पेपर भी लिख दो कि क्यों ये ऐप बनाया एंड क्या है इसमें इसके बारे में एंड क्या नया है इसमें. तो वी रोट अ रिसर्च पेपर एज़ वेल. इफ यू गो टू माय लिंक्डइन यू कैन सी ऐसे जब मैंने एआईएमएल पे काम किया था तो मैंने एक फ्लास्क पे पाइथन यूज़ करके एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा डेटा निकल रहा था एंड ऑल. यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट मेरे लिंक्डइन में नीचे पब्लिकेशंस में आपको वो मिल जाएगा. तो उसका एपीके या रेपो है मेरे गिटहब पे है. अगर आपको देखना हो तो ऑटो सर्टिजन एंड कोवी शॉट्स देयर आर टू रेपोज. ओके. तो अगर आपको देखना हो तो वहां से देख सकते हो. तो बेसिकली ये चीजें थी दैट आई ट्राइड एंड देन आई वाज yep. So in 2021 I got into this program. In 2020 I guess मेरे को Microsoft Loan Student Ambassadors का हुआ था and then 2021 में I became a GDSC lead for my college. Google Developer Student Club lead. मे बी प्रियांशी ने आपको बताया होगा उसके बारे में एंड आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट इट पहले सेशन से पहले, राइट. तो आई वाज अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड. तो हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है एंड उसमें वो गूगल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना उसके बारे में बात करते हैं. वहां पर उन्होंने फ्लटर के बारे में बताया. तो मैं एक्चुअली ढूंढ भी रही थी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए ऐप डेवलपमेंट में क्योंकि सब बोल रहे थे जावा इज डिप्रिसिएटिंग. तो आप देख लो आपको जावा पे ही कंटिन्यू करना है या फिर आपको कॉटलिन सीखना है. तो मैंने कॉटलिन भी ट्राई किया. मैंने गूगल क्लाउड मतलब हमारा कैंपेन होता है तो गूगल क्लाउड भी सब कुछ किया एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट फॉर ऐप डेवलपमेंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू आई ट्राइड एवरीथिंग. देन स्विफ्ट नहीं ट्राई किया मैंने बस बिकॉज दैट वाज आईओएस. तो मुझे इतना था नहीं, मैं एंड्रॉइड पे काम करती थी तो आईओएस का भी मैंने सोचा नहीं था. फिर फ्लटर केम इनटू पिक्चर एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट फ्लटर आई ट्राइड टू लर्न इट. एक एंजेला का कोर्स है, एंजेला यू का. अगर आप इस आर्टिकल पे हो अभी आप जाके देखो तो नीचे मैंने वो कोर्स बताया है. उस कोर्स का लिंक होगा यूडेमी पे. वी हैव अ कोर्स. मैं इसका लिंक दे देती हूँ. अभी ये 529 रुपीज का दिखा रहा है मुझे. एक बार इनकॉग्निटो में जाके देखना कितने का दिखता है ये कोर्स. ओके. तो अगर आप देखो ना एंजेला यू का कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैंने यहीं से स्टार्ट किया था फ्लटर सीखना. बहुत ज़्यादा अच्छा है. इवन आई गॉट एन इंटर्नशिप फ्लटर डोमेन में ही. जब मैंने ये कोर्स का आई गेस 12th वाला पार्ट है एक. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा वाला है वो. इसमें एक 12th मॉड्यूल है. रुको मैं बताती हूँ. BMI कैलकुलेटर. आई डोंट नो व्हिच मॉड्यूल इज दिस. आई गेस 12th मॉड्यूल है. BMI कैलकुलेटर तक मैंने ये कोर्स किया एंड देन आई गॉट एन इंटर्नशिप. तो मेरे ना बेसिक्स
इतने स्ट्रांग हो गए थे फ्लटर के कि मुझे लगने लगा था कि मैं कोई भी यूआई क्रिएट कर सकती हूँ, बट व्हेन आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री आई गॉट टू नो कि नहीं यार, फ्लटर इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग यूआईज, फ्लटर इज मच मोर देन यू नो व्हाट वी थिंक. आई कांट इवन टेल यू बिकॉज अभी आपको समझ नहीं आएगा काफी सारी चीजें, बट व्हेन यू विल गेट इनटू फ्लटर यू विल नो कि फ्लटर इज नॉट जस्ट अ फ्रंट एंड थिंग दैट यू कैन डू. With Firebase, you can create a backend and you can use it with Flutter, and you can create a full stack application with Flutter and Firebase together. And it's not just Firebase, we have Serverpod, which is a backend tool for Flutter now, which is completely created in Dart. Then we have AppWrite, we have a lot of things, okay? So if you go into the industry, then you will see the power of Flutter. And obviously मैंने आपको बताया कि showcase जब हम देख रहे थे Flutter का production level applications, BMW, Alibaba Group, Google Play, Google Earth, अगर आपने देखा हो तो Flutter team ने Google Earth Flutter में बनाया. Flutter Gemini, oh my god, everybody has got into Flutter. And you know there are so many things that you can do with Flutter. You can use ChatGPT, Bard, Gemini, you can use so many things to learn Flutter. We have so many resources to learn Flutter. And even if you are stuck, and if you are active on Twitter, you can just post ki, hey, I'm facing this issue in Flutter, can anybody tell me? And tag the relevant people who are working in Flutter. They'll definitely answer you, because Flutter community is very active on Twitter. That is why I'm very active on Twitter as well. Twitter is not just for politics, okay? जब मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, I thought Twitter is just for politics. But जब मैं Flutter community में मतलब होने लगी थी interactive and all, तब I got to know कि Flutter is you know much more than you know what we see ऊपर से. So these are the resources that you can use to learn Flutter. एंड वी हैव प्रोजेक्ट IDX. अगर आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा कि फ्लटर के लिए आपको कोई हाई एंड मशीन नहीं चाहिए. यू कैन ऑल्सो डू ऑन वेब अब फ्लटर की एप्लीकेशन एंड ऑल. सो जस्ट यू नो learn about it. There are so many things that you can do with Flutter. So this was my journey, how I got into Flutter, and how after internship I'm doing a full-time job and everything, where we create a lot of applications. And in January I'm starting something new, which I'll tell you in a you know when obviously in January only when I'll start. So basically Flutter has a lot of potential. Everybody say कि Flutter बंद हो जाएगा तो what will you do and everything. It's not like कि Flutter is Flutter बंद हो जाएगा and all. And we as developers should understand कि अगर कुछ बंद हो जाएगा, for example, we have the ability to learn something new, because वो developer ही अच्छा नहीं होगा जो नई चीजें सीखने की वो नहीं रखता होगा, right? So basically we should uh, learn and learn and learn basically. So this was my journey. And if you have any doubts with Flutter and everything, I'll drop my link tree and everything. You can go there and you can ask me कि मेरे को ये doubt है Flutter में. Or you can you know look for a local community in Flutter, जिसमें आप जाके मतलब जैसे मैं फ्लटर डेली की को ऑर्गेनाइजर हूँ, तो वी ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर फ्लटर डेवलपर्स. ओके, as a flutter conf india organizer, we try to do this conference every year so that all the Flutter developers or people who are you know who want to do something in Flutter, or who want to migrate to Flutter or anything, they can go there and you know meet new developers, Flutter developers, and you know grow along. That is why the whole point of doing this conference is you can learn something new, and you can obviously get a job, or you can meet new Flutter developers, not just swags and food or anything. That is complimentary. Okay. Uh, do you have any doubts or anything like that? I know it is a very big session, but बहुत मतलब almost it is over. हेलो मैम. हाँ, okay. बोलो. मैम आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म में रिएक्ट नेटिव का मतलब क्यों नहीं किया मैम? रिएक्ट नेटिव थोड़ा आसान नहीं पड़ेगा? मतलब उसमें जावा स्क्रिप्ट है जो कि वेब डेवलपमेंट में भी यूज हो जाएगा और मतलब सारा काम हो जाएगा मतलब. Mm-hmm. Okay.
मेरे को पता है हर हर जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ ना उसमें कोई ना कोई ये सवाल पूछता ही है, सो थैंक यू अमन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये भी कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर। सो बेसिकली रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हो, नो डाउट, बट रिएक्ट नेटिव के साथ प्रॉब्लम क्या आता है, मैंने बोला फ्लटर के पास हॉट रीलोड फीचर है, ओके? तो आपको फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में परफॉर्मेंस वाइज फ्लटर इज गुड, अगर आप रिएक्ट नेटिव के उसमें कंपेयर करो, बिकॉज रिएक्ट नेटिव फिर से आपकी अगर आपको कलर चेंज करना है या कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है वो पूरा का पूरा दोबारा से पूरा का पूरा नेटिवली कंपाइल करता है, ओके? रिएक्ट नेटिव में जब जाना सही है अगर आप पहले से ही एक वेब डेवलपर, दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आता है तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव ईजी होगा रादर देन फ्लटर। मैंने फ्लटर इसलिए चूज किया बिकॉज मैं जावा पे काम करती थी, मैं वेब पे इतना काम नहीं किया और वेब मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, और मैं पहले ही ऐप डेवलपमेंट जावा के थ्रू करती थी, दैट इज व्हाई आई स्विच टू फ्लटर। मैंने कॉटलिन भी ट्राई किया था, राइट, बट कॉटलिन में वही कि आप सिर्फ एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करो, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद फ्लटर। So that is the whole point कि React Native, why not React Native and why Flutter? अगर आप पहले से ही वेब डेवलपर हो तो आई वुड सजेस्ट कि गो विद रिएक्ट नेटिव, एंड मैं सजेस्ट क्यों करूँ, बेसिकली आप खुद ट्राई करो, रिएक्ट नेटिव भी ट्राई करो एंड फ्लटर भी ट्राई करो, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या बेटर लग रहा है करने में। बट दोनों के पास बहुत पोटेंशियल है, दैट इज फॉर श्योर। इट्स नॉट लाइक फ्लटर में आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं या डिफिकल्ट होता है, रिएक्ट नेटिव ईजी है तो आपको रिएक्ट, और यार रिएक्ट नेटिव पुराना है तो आपको जॉब उसमें ज्यादा इजीली मिलेगी या कुछ, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जॉब दोनों में मिल जाएगी। आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई एम अ 2022 graduate only, and I know for a fact that you can do a job in Flutter. Mera, I was from a university. I was from University of Delhi, and I did a BSc honors in computer science degree and not a BTech degree. तो मतलब मेरा कॉलेज इतना प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड नहीं था, एंड देन आई गॉट माय ओन थिंग। मैंने पहले इंटर्नशिप्स की थर्ड ईयर में ही, एंड देन मैंने आई गेस 2 इंटर्नशिप्स की थी, एंड देन उसके बाद मैंने एक फुल टाइम जॉब की थी। दिस इज माय जर्नी, सबकी जर्नी अलग होती है, so that is why I didn't do React Native and I did do Flutter. I hope that answers your question. यस मैम। मैम फ्लटर में आपने मतलब डीबी मतलब डेटाबेस में क्या यूज किया मैम? मैंने Firebase यूज किया है एंड मैंने सर्वोपॉड भी यूज किया है। और मैम बैकएंड के लिए जैसे आपने बोला, तो मैम फ्लटर अगर हम सीख रहे हैं तो बैकएंड में मतलब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या? बैकएंड में आप Firebase पे काम कर सकते हो, Flutter एंड Firebase combine together you can create this whole thing, but आपको Flutter के साथ आप MongoDB भी कर सकते हो। देखो, फ्लटर आप अगर सीख रहे हो ना तो आप एप्लीकेशंस, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको बैकएंड चाहिए, ओके? कहीं ना कहीं आपको सर्वर साइड कुछ तो चाहिए, कुछ तो बैकएंड चाहिए जहां से आप कम्युनिकेट कर पाओ क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो उसके लिए मैंने फायरबेस यूज किया है, सर्वोपॉड यूज किया है, एपराइट यूज किया है, बहुत सारी चीजें हैं, इवन मोंगो डीबी भी आप यूज कर सकते हो, ओके? तो पहले आप फ्लटर से शुरू करो, फ्रंट एंड बनाना सीख जाओ, जैसे आप काम करने लगोगे ना फ्लटर के साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि बैकएंड भी आप धीरे धीरे फ्लटर के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हो। बट ऑब्वियसली यू नीड अ बैकएंड, इट्स नॉट लाइक आपको बैकएंड नहीं सीखना पड़ेगा, बट वो धीरे धीरे फ्लो में हो जाता है जब आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन क्रिएट करने लगते हो। मैम मैंने एसक्यूएल मतलब मुझे आता है, मतलब उस पे काम मैंने किया है, तो क्या मैं मतलब डीबी कर डेटाबेस सकते में हो, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सर्च इन गूगल। No, I'm just kidding. If you have any questions, jaldi jaldi bata do. I'll answer and then we'll go with the quiz. Priyanshi, I Yeah. know we are out of time. No, no, it's okay. It's okay. Like my team is already working on the press release, and like we just need a picture, a group photo to send to the Ah, okay, okay. newspaper. Done, done. Done, done, done. We'll do that. I know, I And know. yeah, we have tagged you a lot over over Instagram, so you can check our stories. Oh, okay, Yeah, okay. Sure, sure. I'll do that. We'll open camera and, we'll click a picture and yeah, everything. Just yeah. like That's quiz is our there and then. that's our ritual. We always take a good picture with our speaker. Oh, that's so nice. Okay, I have some questions. Where to search for internships? LinkedIn. LinkedIn is the best you can do. And to be honest, when I was looking for internships,
मैं लिंक्डइन पे डाल देती थी एंड आई यूज्ड टू टैग रिलेवेंट पीपल जो कि फ्लटर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं. वी हैव गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स फॉर डार्ट फ्लटर and you can tag them. They will obviously help you. Cold emailing, DM करो. एक टेम्पलेट चूज कर लो कि दिस इज द टेम्पलेट मैं रिक्रूटर को भेजूंगा. एचआरस, देन लिंक्डइन का जॉब्स जो होता है वहाँ पे यू कैन गेट इंटर्नशिप्स. आप अपनी प्रोफाइल को ऐसे रिफाइन करो कि आपको फ्लटर के रिकमेंडेशन आए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू. जब मैं भी ढूंढ रही थी इंटर्नशिप्स, मैं फ्लटर का ही पूरा रिफाइन करके रखा था अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल को. इवन जॉब सेक्शन में मैं डाल देती थी आई एम लुकिंग फॉर फ्रंट एंड जॉब्स एंड दैट टू ऑफ अ फ्लटर डेवलपर. सो दैट इज हाउ आई गॉट. एंड मैं आपको गिटहब पे इतना स्ट्रेस इसीलिए ही कर रही थी बिकॉज आई गॉट माई फर्स्ट जॉब थ्रू गिटहब. तो गिटहब पे जब मैं प्रोजेक्ट्स बना के डालती थी, पीपल यूज टू सी इट कि ओके शी हैज डन दिस, शी नो दिस, शी हैज डन दिस. एंड मैं उसकी रीडमी बहुत ही रिफाइन करती थी कि रीडमी शुड बी गुड बिकॉज एट अ ग्लांस कोई आपका कोड क्लोन नहीं करेगा एंड उसको रन करके नहीं देखेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है. वो आपकी रीडमी देखता है सबसे पहले. तो आप अपनी रीडमी को रिफाइन करके रखो. ओके. So this is how you get an internship. What is run app function in Flutter? Run app is that function in Flutter which will obviously run your app. So main function में run app function जो है वो हम लिखते हैं so that we can run our Flutter app. Then so I have answered this where to search for an internship. Even if on Twitter you write कि I'm looking for an internship in this, and we have Flutter community basically on Slack and on Twitter, and obviously just tag the relevant people. Even uh, you can tag me. Hey, I'm looking for an internship in Flutter. If any leads, please comment down or even let me know or something like that. So therein you can do that. Any other question? Slack channel? Let's start Oh, with the quiz. quiz. Yeah, yeah, yeah. Okay. Uh, Slack. I'll just answer like last one question. Can you Yes. share Slack channel for Flutter community? I'll ask the admin to share me the link and then I'll see if I can share that. Okay. Okay. Django with Flutter, you can do everything with Flutter. Okay. So I have to share my entire screen now. Let me see. So are you all ready for some fun quiz and win exciting swags? I hope अगर ये in person event होता तो I would have given you swags, flutter oriented swags, but I'm sorry I can't do that right now, but we can play a quiz. I hope I was in Lucknow. Cool. So join this, and once you have joined, let me know. Are you able to join? Okay, okay, okay. I'll try to share my tab and then we'll proceed. Those who have joined, write in the chat, joined. Dart is used in Dart Frog. Dart can be used as a backend. Dart has so many things. It's telling you have not participated. The answers are already there. Why? Give me a moment. Let me check. Why is it happening? Is it showing you the answers already? Mm,
Let me check. Yes, it is. All the answers Mm, are mm, up. mm. Uh, okay. I actually did duplicate this, so that is why it says. Okay, okay. So then, then we can just look at the quiz, I guess. I don't know why this happened. Mm-mm-mm. No issue, no problem. Okay. Mm-mm-mm. Can a column have multiple children? Mm-mm. You can just write, obviously, if it even if it shows answers, then it's fine. You can ask me any doubt if you have in this. I hope it should work fine. I don't know why. It is working, I guess. It is working fine. Yeah. Okay, can a column have multiple children? True. Is text widget a stateful widget? Someone said true. Why? It's fine even if it says you're not participating or answers are visible. You can write it in the chat.